चाहे वो गलत हो प्लीज़ माफ़ कर देना, अगर गलत वर्ड्स है बस उसको समझने की कोशिश कर लेना। आई फाइंड अ सॉल्यूशन लाइक एट द लास्ट नाइट, लेट्स ट्राई टू बी हैप्पी एट एवरी मोमेंट बिकॉज दिस लाइफ इज़ नॉट वेरी ईजी, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल एंड यू हैव टू हैप्पी। गिव अप मत करना इस साल बिल्कुल भी, तो बेस्ट जाओ। ओके, जैसे एवरीवन, आज मेरा डे 31 है और बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आप हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो और ब्लेस्ड रहो और हमेशा खुश होने की कोशिश करो, क्योंकि आपको अपने गोल पे ध्यान देना है तो खुश होना ज़रूरी है। गिव अप मत करना इस साल बिल्कुल भी, तो बेस्ट जाओ। ओके, जैसे मेरे साथ बने रहो और मैं भी गिव अप नहीं करूँगी। तो हैप्पी न्यू ईयर टू मी ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो न्यू ईयर फॉर मी। सो टुडे आई फाइंड अ सॉल्यूशन लाइक एट द लास्ट नाइट। मैंने खुद से सोचा कि मुझे क्या करना है, फिर मैंने दिमाग लगाया। मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और मैंने सर्च किया मुझे क्या करना है। फिर मैंने क्या किया, 5 क्वेश्चन डेली करने हैं मुझे, 5 क्वेश्चन डेली करने हैं हर चीज़ में। तो कैसे भी करके करना है। तो मैंने पहले लॉजिक यूज़ करना है, फिर लॉजिक मतलब खुद से क्वेश्चन देखते क्या बन रहा है आपके लॉजिक, फिर उसका ट्राई रन क्या हो सकता है और फिर उसका कोड क्या हो सकता है। देन आई विल चेक बाय वीडियो कि ये सही है या नहीं है। सो मैं ऐसा करूँगी इस बार। बता इसलिए दिया क्योंकि मैंने सोचा, तो मैंने कहा करूँगी, दिखा देती हूँ। तो आज हम फाइनली समझ गए होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ 5 क्वेश्चंस ऑफ एरे, जो मैं करूँगी आपको दिखाती जाऊँगी और मैं ट्राई करूँगी इंग्लिश में बात करने की, चाहे वो गलत हो प्लीज़ माफ़ कर देना, अगर गलत वर्ड्स है बस उसको समझने की कोशिश कर लेना, क्योंकि मैं अपना 100% दूँगी। और गिव अप मत करना, डीएसए को कंसिस्टेंसी दो, इस आज से कर लो, चाहे जो भी स्टार्ट करना चाह रहा है आज से अच्छी अच्छी स्टार्ट कर दो, बढ़िया बढ़िया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैंने सर्च किया मुझे क्या करना है, फिर मैंने क्या किया, 5 क्वेश्चन डेली करने हैं मुझे, 5 क्वेश्चन डेली करने हैं हर चीज़ में। तो कैसे भी करके करना है। तो मैंने पहले लॉजिक यूज़ करना है, फिर लॉजिक मतलब खुद से क्वेश्चन देखते क्या बन रहा है आपकी लॉजिक, फिर उसका ट्राई रन क्या हो सकता है और फिर उसका कोड क्या हो सकता है। देन आई विल चेक बाय वीडियो कि ये सही है या नहीं है। सो मैं ऐसा करूँगी इस बार। बता इसलिए दिया क्योंकि मैंने सोचा, तो मैंने कहा करूँगी, दिखा देती हूँ। तो आज हम फाइनली समझ गए होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ 5 क्वेश्चंस ऑफ एरे, जो मैं करूँगी आपको दिखाती जाऊँगी और मैं ट्राई करूँगी इंग्लिश में बात करने की। मैं आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी इसको लेके। लाइक फर्स्ट होगी मेरी, मुझे लार्जेस्ट फाइंड करना है एक एरे में। तो मैं फर्स्ट का बताती हूँ प्रॉब्लम मेरी, फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। तो मैं नोट कर रही हूँ, फिर उसका मैं लॉजिक लिखूँगी खुद से। लॉजिक लिखने के बाद लार्जेस्ट फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट, लॉजिक लिखने के बाद फिर मैं इसका ड्राई रन लिखूँगी, ड्राई कोड, फिर उसका एक कोड बनाऊँगी। तो ऐसे करके आज मैं 5 क्वेश्चन कर रही हूँ। तो मैं पहले कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन लिख लिया है, अब मैं इसका लॉजिक सोच लेती हूँ। लॉजिक सोचने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैं सोचती हूँ पहले। तो फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट, एक एरे दिया हो, ठीक है, मेरे एक एरे है। मैं आपको या फिर लॉजिक दिखाती जाती हूँ अपनी जगह से ज़्यादा, जो मेरे ये है नोटबुक, तो वो लिख लूँगी, तो जिससे पता चल जाएगा क्या मेरा लॉजिक रहा है। एक सेकेंड, मेरा ये क्वेश्चन था, फिर मैंने लॉजिक सोचा कि मेरे को पूरी रो ट्रेवर्स करना है, उसमें चेक करना है, फिर ड्राई रन। मैंने देखो मेरे उस पर मत जाना मैंने सही किया है नहीं, बट मैंने ट्राई किया ड्राई रन वगैरह, फिर मैंने उसका कोड बनाने की कोशिश की, चेक किया कि मैंने सही आया। पहले मैंने क्या किया, पहले हर एक वैल्यू को मैं लार्जेस्ट में स्टोर कराऊंगी, ठीक है। और मैंने एक लूप चलाई जो आई से 0 से इंडेक्स लेके पूरी एंड तक जाएगी। और अगर मैंने बोला अगर एरिया बड़ा आ रहा है लार्जेस्ट से, तो मुझे वो लार्जेस्ट में स्टोर करना है, फिर रिटर्न करना है लार्जेस्ट, देखना है सही है नहीं। अब मैं चेक कर लूँ पहले मेरे पास लिखा हुआ है नहीं कि सही है, तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। मुझे मेरी मिस्टेक मिली कि लाइक मैंने तो ये एरे का पार्ट किया है, तो मुझे एरे डिसाइड करना था, तो मैंने इनसाइड मेन। तो मेरी मिस्टेक बताती हूँ, मेरी मिस्टेक ये रही है कि मैं फॉरगेट हो गई थी। आई एम फॉरगेटिंग माई एरे पार्ट। So I will decide now. Correct code will, sorry, I will try it. Correct code क्या होगा, what is correct code? First one is inside main I create a variable name which is largest equal to int minimum, because how many largest exist with maximum largest was int minimum. If int largest store is लार्जेस्ट इंट मिनिमम था, फिर
int array. I will create a array which stores some values like 1, 2, -3, 24, 8, etc. in size equal to 1, 2, 3, 4, 5, size 5. Now if for I will choose the for loop because I have to travel whole array. So if array I greater than largest, this is same as I do this before this, so please understand my English, but I will try it. But only I am not doing in this part, which is to decide to create an array, to decide in size, and create as large equal to is not 0 because this is not normal array, this is array. So so no maximum largest, what is maximum largest, which is int minimum. If array I greater than largest, then I will store largest equal to array I, value of ea. This is also possible, and then I have to print the largest. Okay, but there is also a second method for this. Don't do this and write this largest equal to largest. In largest variable we have to check the maximum of which array I or largest, which is maximum, print there. Okay, so I have to print this. Don't do this 2 lines, only print this, then you find the maximum of this. And now I am doing the second. I have to find the second largest. This question was done. Now question number second, which one is to find second largest. Okay, to find second largest in an array, first I am thinking and create a diary code and then encode in according to me, then I will show you. Okay, so wait and watch. Finally I am done my second question with my logic, which one first to create two variables, which one is largest and second largest, to store two variables, two values, which were first one is largest of this array and second one is second largest of the largest. Then I will try a dry run. Then I use the my own thought to print this code, and I don't know this is right or not, then I will check it in my notebook. So I will clear this is wrong and right. Okay, so wait and watch. Yeah, this is right code, but I don't know this is right way to write the logic and right way to write the try run, but I will try it. And now I am trying the next question, which one is third. So first I am doing this and I will show you. Okay, so wait. But I am done this question with my own, and this is my question to find the to find the index of 8 number in an array to print the index value. Index, that means 0 1 2, add 8 exists on the 2 index value, add the 2 index. Now target given a logic, I have to use the logic, which one is traverse whole array. Then if number equal to target, then print this index number. Dry run. See this is my dry run. I am trying, not I am expert in this. I am trying only. So this is my dry run. Then code, I will check it and then I will show you it is right or not. So wait. Finally, I am checking my answers and this is correct. I knew it first one is not correct, but second and third one is correct. Now I am trying fourth question and fifth question. So let it be checked, then it is wrong and right. Okay, so first we have to search. First I have to done it. So let's do it. I am forget to show you this how it is possible. When I move the all zeros to end, first one we have to sort the array. Then which one is repeated, then they are adjacent of each other, and easily move after move all zeros to end. So first sorted the array, create variable which store the only non-zero variable. Then this, after this, so I will only watch my dry run, and then this is my code. I will only explain my code how it is possible. First one is when I create the
vector int function. Function, not is a function. Yes, function. Yeah, I don't know. Yes. If array dot size equal to 0, then return 0. Why not? Because if array size is 0, then what you have to print? Only 0. No? When you use a variable name pause and start with 1, then they traverse at all the index value and then check it. The array I does not equal to array minus 1, then it is pause equal to array I and pause plus plus. That means if there is similar value, then skip it, and if it is different value, then and then store in the pause and pause plus plus, because to large the size of not zero value part, and then return pause. Up now I am doing the next. No, I am not directly do this, because I am stuck in this, like pause equal to 0. I will do this here, but when I check it this is wrong or right, then I will check it this to start pause equal to 1, and this pause is a variable. So next question, which one is left rotate by 1, then I will do it, then I will show you. This is my last question of today. So first I have to do it, then I will show you. Okay, this is my last question of today. So I left rotate, it's very simple. Like we have to show this result, like 2 3 4 5, move to the left by one index, and there is 0 put to the array and minus 1. So I will store the array 0 as a temporary variable. Then this is my logic. I don't know how to write logic, but I will try it at daily. So try and this also do it, like store array I minus 1. Array I minus 1 matlab, that means if array I is equal to this, then array minus 1 equal to this, I minus 1 is equal to this, matlab at this position we have to store 2. So matlab first value index, and array n minus 1, at the last index of the array we have to put the temporary variable, because this is this is one this is all want left rotate array by 1. So this is done, and this is my final code. Which one is create a function and then void left rotate, create a left rotate is function. Okay, and then call it on to the inside main whatever you want. So create a size and equal to create ठीक है, if n इक्वल टू 0 रिटर्न करेगा वो. देन इन i1 से स्टार्ट कर दीजिए और n तक ले जाइए. array I minus 1, put the value of array I, and array n minus put the value of temporary. So it is the whole code of the test, and I will check it. This is true. So finally wait. So finally आज कंप्लीट कर लिया मैंने. और ये सोच रहा हूँ मैं एक ही कपड़े में क्यों देख रही हूँ, बट इसलिए देख रही हूँ क्योंकि सुबह हो रही है, अभी 5 बज रहे हैं, तो नहीं करा तो मैंने अभी शूट कर लिया क्योंकि आज न्यू ईयर है. बाय द वे मैं आपको बता दूँ आज मेरा 5 क्वेश्चन क्यों किए, क्योंकि मैंने कल सोचा मेरे को करना क्या है कैसे करना है, तो मैंने एक सेकेंड सुन दिया, बट तो फिर मैंने सोचा कि कैसे करना है क्या करना है. फिर मैंने दिमाग लगाया कि नहीं मुझे प्रैक्टिस ही करनी है, खुद को इम्प्रूव करना है. तब जाके मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मैं पर डे 5 क्वेश्चंस करूँगी इसके एरे के, पर डे करूँगी. और स्टैब की जो शीट है उसको पहले लॉजिक खुद से, फिर उसका ड्राई रन, फिर कोड. और आप सोचो लॉजिक में ये क्या लिख रही है, कभी ड्राई रन लिख दीजिए, है किसी ड्राई रन में लॉजिक लिख रही है, कुछ भी लिख रही हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी, सीधी बात ये है. और हाँ मैंने आज 5 क्वेश्चन किए, कल भी 5 क्वेश्चन करूँगी, डेली में 5 क्वेश्चन करने वाली हूँ. एंड यू भूल गई मैं. You are noticing that I am talking in English because of because of whatever because of whatever I tell to you in last video. So I will do it. Whatever the reason, like I am not right to pronounce it, I am not right to convert it into English, and whatever. But I will try it because I have to select an interview, so I have to do it. Okay. So आज के लिए इतना काफ़ी है. इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो करना है करो. और हम मिलेंगे कल की वीडियो में. बट उससे पहले बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टार्ट दिस ईयर with your joy, with full happiness. Or let's try to be happy at every moment, because this life is not very easy. So you have to focus on your goal and you have to happy.
अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा अपना देखो अच्छा बनाना है, तो मेरे को अभी नहाना भी है। फिर उसके बाद आपको रूटीन दिख जाएगा आज का दिखाऊंगी वैसे, शॉर्ट में दिखा दूँगी। तो हम मिलेंगे हम कल की वीडियो में, जिसमें भी 5 क्वेश्चंस करेंगे। और मैं जैसे अपनी गलती को देख के लाई हूँ, वैसे आप भी सोचा करो आपसे क्या गलती हुई है और आप भी उसका सॉल्यूशन निकाला करो। तो लेट्स डू विद मी एंड स्टे कंसिस्टेंट विद मी। ओके, सो बाय बाय।